client from Rajasthan. थोड़ा उल्ली साइड लो ना. And we are going to start our program, the grand meet and greet with Roma Devi. Sorry, मारी मिस्टेक. मैं So थोड़ा उल्ली most साइड of लो them, ना. like she's a celebrity personality. But I want to say something, a brief introduction about her. She is from Bardmer, Rajasthan, and she's an Indian social worker, fashion designer, and traditional handicraft artist from Bardmer, Rajasthan. Roma Devi received the Nari Shakti Puraskar 2018, the highest civilian honor for women in India. She is associated with a network of over 30,000 rural women, train them and link them to the livelihood. So, have patience and we are going to start. Thank you. MC कौन है ये बंदा? पूरा टीम है टीम पूरी तो आपको दिखेगा तो वो ऐसे तो पंखा के लिए ना हमारे टाइप करना तो अपने पे करेंगे. So I want to add one more thing that we have Deepak ji with us. Deepak ji and Surbi ji's daughter Pallavi. She is a college junior and she is going to come and with all the Rajasthani attire, looking so pretty, so beautiful. She is coming on her way. So Pallavi is, Roma ji has personally designed an outfit and Pallavi is having that outfit from Roma ji collection. And we have Shobna ji. Yes, absolutely. Hello everyone, good evening. Hope you are having a good time. And let's welcome Pallavi ji and Shobna Patel ji to the stage with big round of applause. Shobna ji has done so much for, as we know, that for the university community. Shakti the power with young generation, Pallavi Joshi. This is the absolute wonder that how one of the leaders of community, Shobna ji, is leading Pallavi, the next generation, the future generation. Absolutely gorgeous attire, Rajasthani cultural representation. None other than fashion designer Roma Devi ji. Fashion designer मैंने सोचा baby means माता जी. Let's do a round of applause and let's be ready to welcome here comes, ladies and gentlemen, Roma Devi ji. Let's give a round of applause and standing ovation. The New Jersey star, welcome to Roma Devi ji, all the way from India, our country, our culture, हमारे देश का करूर. And all the beautiful ladies, lovely ladies, joining her once again. Shobna Patel ji and Pallavi ji welcoming Roma Devi ji from all the way from India, and thanks to Deepak ji and Surbi ji. Thank you so much all of you for joining us tonight. It means a lot. Come on.
स्वागत करते हैं ना तो कहते हैं केसरिया वालम आवोनी पधारो मारे देश। जी हाँ, पधारो हमारे देश। ये है अमेरिका और ये है राजस्थान। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। सो वी आर हियर to welcome Roma Devi ji and the gorgeous Roma Devi ji, the fashion designer, and the Shobna Devi ji from Royal Albert Palace. Pallavi, the gorgeous, she is looking very pretty in the Rajasthani attire. And Surbi ji, thank you very very much. Thank you so much, Deepak ji. So Shobna ji want to say something, so. हम अभी हुमा जी के साथ दिया जलाएंगे और आल्बर्ट विल कम ऑन द स्टेज नाउ, तो ब्रिंग द टेबल ऑन द स्टेज, सो वी विल लाइट अप द दिया। भैया please come. Dr. Dinesh and Deepak ji. हेलो बाय। Everybody look into all these lenses. Beginning here. 1, 2. Look at all the cameras, please. We are done. Thank you. Let's give a big hand to everybody. Thank ये you. लेकर છે તો તમારો મસ્ત કોસ્ટ્યુમ તો આવી શકે. અરે આવી ગયા થેન્ક યુ થેન્ક યુ ठीक है. तो ये फोटो ले लो भाई. તમે વાત કરો.
evening, everyone. Okay, now we would like to have the welcome dance for हमारे मेहमान रुमा देवी जी है, डॉक्टर रुमा देवी। ये आज हम एक डांस कर रहे हैं। जो लड़कियां डांस कर रही है वो मिस इंडिया न्यू जर्सी 2022 पेजेंट की लीडर्स है। इसमें है मिस रॉयल आल्बर्ट पैलेस तन्मिका एंड दारिका। Please give such a big hand to both girls. They working so hard in the 2 days. They decide to do this dance. So please give a big hand. वो पहले ही कह रहा हुडा मुझे से तुमने बात खराब कर दी है। चलो So when we start the beautiful welcome dance for Roma Devi ji, I just want to share something about her that she born in Barmi, Rajasthan. And also over there, and she dropped out school when she was in 8th class, and she learned embroidery. Actually, क्या होता है? This is the normal regular life कि हम जब एक विलेज लाइफ ऐसी ही होती है कि जब कुछ और नहीं होता तो घर के काम सीखने लगते हैं। तो शी लर्न एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर एंड स्टार्ट द एम्ब्रॉयडरी थिंग बाय हरसेल्फ। She got married at the age of 17. That is not new thing for India, Rajasthan. So she got married at the age of 17 and lost her first son in just in 48 hours of the birth. This is like not good. So we are about to hear the welcome dance. સાંભળ એને વચ્ચે કરજે. She started to do, I think they are ready. So girls are ready to perform? All right. So enjoy the beautiful welcome dance by beautiful girls. Thank you.
Very good. So how was it? The beautiful dance, Hoover or everything like it badly scene only बनाई थी, but it was so beautiful. They do it very nicely. So do you want to say something? Okay. So let me please allow me to narrate the success story of Roma Devi ji. She started to do some work for earning. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि उन्होंने एम्ब्रॉयडरी सीखी and then she started to do some work like for earning. She started a self-help group after managing to convince about 10 women. जी, 10 only 10 ladies को लेकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया और केवल 100 रुपये सबसे इकट्ठे किए और सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और स्टार्ट कर दिया काम करना। तो ये कहानी आगे चलती रहेगी, लेकिन एक और आप जैसा कि देख सकते हैं स्टेज के ऊपर कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं। सो दे आर गोइंग टू परफॉर्म। Now we're going to have a dance performed by Kalashri School of Arts, led by my beloved Guruji, Srimati Veena Menon, a disciple of dance exponent and perfectionist Kala Mandala, Natanam Gopalakrishnan, started learning dance at the age of 2.5. Srimati Veena Menon, who was trained in Bharatanatyam, Kuchipudi, Mohiniyattam, and Kathakali, established Kalashri School of Arts in 1992. She has personally trained over 2,000 students in these dance forms and has choreographed and organized several dance shows in the USA. Kalashri School of Arts has won several competitions and best costumes in national and international dance events. Students have also won solo national competitions in the USA. Veena Menon has had the opportunity to perform and travel worldwide with Bollywood's dream girl, Hema Malini. Veena Menon and her students have had the honor to perform with Bollywood's Meenakshi Shishadri, world-renowned dancer and actors, Padmini, Shobana, Vineet, Mohanlal, musicians like DJ Yeshudas, Kumar Shanu, Udit Narayan, Alka Yagnik, Sukhvinder Singh, etc. Her students have also performed for the former US President Bill Clinton, the New Jersey Governor's inauguration, the New York Governor's fundraiser, the United Nations, and also at Madison Square Garden during Indian Prime Minister Modi's visit to New York. Students of Kalashri auditioned for the Oscar Awards and were selected to perform in 2009 during A.R. Rahman's Slumdog Millionaire win at the Oscar Awards. Kalashri won the Best Performance and Best Costume Awards at the World Dance Competition in Barcelona, Spain. The students have performed during Miami Heat's and Brooklyn Nets basketball and halftime show at the Izod Sports Arena and in New Jersey and Prudential Center during the NHL's halftime show. Veena Menon has choreographed an off-Broadway show, a Ramayana ballet, Krishna Leela, Birth to Resurrection of Jesus in Bharatanatyam, the concept of the 5 elements, 4 seasons, Save the Rainforests, and Sita Swayambhu. 87 engagements have been performed under Veena Menon's guidance. Earlier in the summer, her students performed the first ever engagement at Carnegie Hall and the first ever engagement in Japan, which was my engagement. I'm a very proud graduate of Kalashri School of Arts. Veena Menon has won the Kerala Ratna Janma Kerala title from Philadelphia Art Panel and has recently been one of the 7 Keralites to be bestowed with an award by World Malayali Council for promoting art and culture in America. Kalashri has had the privilege of performing at the Carnegie Hall in New York in 2019 and for All India Dance Festival 2022. This year, Veena Menon has choreographed and introduced Aladipu, a pure dance form in Mohiniyattam, a classical dance from Kerala, and is looking forward to adding more classical work into a dance repertoire. Veena Menon is looking forward to further serving the community, helping children and teens to understand their roots and
and get involved in it in a constructive and disciplined manner. We all know Boomer has become popular because of his Roma Devi, and I'm really very looking forward to watching my fellow students of Kalashi School of Arts perform here today. I was expected to perform, but due to uncertain events, I could not join in. Now, here we go with the performance by Kalashi School of Arts students.
શોભનાબેન આગળ આવીને યસ થેન્ક યુ. बाजू बताओ बोलो. A token of appreciation from Roma Devi ji. यहाँ पे. Thank you so much. Thank you. Thank you. Next. बिल्कुल, अगर एक राजस्थानी कोई हो यहाँ पर और वो घूमर ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो ब्यूटीफुल डांस बाय शोभना जी ने बहुत बहुत अच्छा साथ दिया. पल्लवी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड डिड वेरी गुड जॉब. थैंक यू. और रोमा देवी जी तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एंड द गर्ल्स इन द ब्लू ड्रेसेस दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब टुडे. थैंक यू. आई होप यू एंजॉयड. तालियां बजती रहे फॉर ब्यूटीफुल गर्ल्स. दे आर लुकिंग सो प्रिटी. थैंक यू सो मच. Come front. That's it. Thank you. Thank you. जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले रूमा देवी जी की सक्सेस स्टोरी, और अगर मैं कहूँ कि इट वॉज नॉट सो लॉन्ग, इट वॉज द ईयर 2006 when she जब उन्होंने अपने साथ की 10 और लेडीज को इकट्ठा किया एंड दे ब्रॉट 10 सेकेंड हैंड मशीन और दे स्टार्टेड देयर वर्क फॉर अर्निंग. નો લેન્સ એટલો મસ્ત છે ને, 30 ફોટા બસ થઈ. હા, એક સેકન્ડ. હજુ લાસ્ટ જો. मेरी माँ की डेथ हो गई थी और उसके बाद मतलब जब भी मैं स्कूल से आती सहेलियों के साथ में घर जाती तो घर में मेरी माँ नहीं होती थी और उनको तो सामने आती उसका बैग लेती और उनको खाने के लिए देती. 17 साल की थी जब शादी हो गई. शादी के बाद भी जब मेरे पहला बच्चा हुआ तो मुझे लगा कि अब जिंदगी खुशियाँ आएगी, लेकिन वो भी भगवान ने नहीं ली. फिर भी सोचा कि अब मैं कुछ काम करूँगी, घर में ऐसे नहीं बैठूँगी. या तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करे या कंस्ट्रक्शन का काम करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था. लेकिन फिर भी मैंने सोचा जो बचपन में दादी के साथ में बैठ के जो कसीदा करे का काम सीखा था उसी से कुछ करते हैं. तो फिर हमने एक ऐसी सी बनाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी. फिर हमने किसी से पूछा तो बताया कि ग्रामीण विकास योजना संस्थान है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, अगर आप उनके पास जाओगे तो आपको कुछ मदद मिलेगी. तो हमने बोला कि हमें काम की ज़रूरत है, हमें काम करना है, आप एक बार हमारे हम पे भरोसा करके देखिए. तो जब ऑर्डर का काम दिया गया तो हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे पास में पहली बार कुछ काम मिला था हमें, और हम नेक्स्ट डे ही वो सारा काम करके ले आए. तो इतने जल्दी कैसे बना के ले आए आप? उनका रात भर नहीं सोए थे, हमने पूरी रात काम किया था और सुबह हमने काम जमा करवा दिया. तो उनको बहुत खुशी हुई कि आप वास्तव में काम करना चाहते हैं, ये सब मिलकर काम करेंगे. रोमा जी ने न केवल फैशन और डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, बल्कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने गांव देहात की उन महिलाओं के मन में ये प्रेरणा जगा थी कि उनका जीवन खुले सौदे तक सीमित नहीं है. वो लोग भी जो पढ़ी लिखी और उनकी बहनें उसी तरीके से अपने ज़िंदगी में किसी अच्छे मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं. तो हमने जाके उनके घरों के बीच में उनको स्किन की ट्रेनिंग दिया, डिजाइनिंग का ट्रेनिंग दिया. आज वो खुद एक सक्षम हो गए हैं और उसके बाद में हमने इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी करना था. जर्मनी टेक्सटाइल, वहाँ पे एक टेक्सटाइल का फेयर होता है जो सबसे बड़ा होता है.
वहाँ से मौका मिला। यहाँ पे रूरल एरिया की जो महिलाएं हैं वो आगे बहुत बहुत धन्यवाद। हम गुजरात से आए और ये सब सीखने के लिए 2 दिन तक आपने जो मार्गदर्शन दिया हमें, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार है। और जब भी आए तब हमारी महिलाओं को ये सब काम सिखाएं, ऐसे हमारे आशा है। मैं महिलाओं से एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि महिला का सम्मान करें। विक्रम जी हमारे साथ हैं, उनके लिए बहुत बहुत तालियां। खुद लड़े, हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद में विश्वास है तो अड़े रहें और खड़े रहें। विक्रम जी रोमा जी के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रोमा जी के पीछे बिल्कुल फोर्स के जैसे खड़े हैं। उन्होंने बहुत रोमा जी का साथ दिया है और हम देख रहे हैं कि रात रात झक के पूरा यहाँ से भी मैनेज करते हैं। तो विक्रम जी के लिए बहुत बहुत तालियां और एक बार रोमा जी के लिए वापस बहुत बहुत तालियां। What a beautiful story, right? Round of applause for this video. So my name is Pallavi, and I have had the honor and privilege for the past couple of weeks to get to know Roma Devi and learn a little bit from her and be inspired by her. And I'm sure that there's many other people in this room that are also inspired. And along with that, 30,000 people, 30,000 women that she has impacted in rural Rajasthan. So round of applause for that. So I've had the opportunity to learn a lot about her over the past couple of weeks, and I want to share all that I've learned with you. So we're going to be presenting a presentation in which you can learn a little bit more about Roma Devi, her work, her foundation, and the impact that she has made on all of these women's lives. So as I said, this family contains 30,000 rural women, and it is growing every single day. So they are working with GBCS. It's a non-governmental, non-profit, non-political, and social welfare association that is uplifting women. It was established on 1998, and it has been working on a bunch of activities for rural development since then. Their particular aim is that nobody should be discriminated in any way possible, not against caste, religion, race, gender. In no way should anyone be discriminated. Everyone should have equal opportunity for all. So they now have a team of 7 board members, 35 people, 500 volunteers, 30,000 women, over 250 villages that are making tens of crafts and applique designs, embroideries, and have a whole line of products. Now, Roma Devi is a very accomplished woman. She has done a lot of incredible things, and for that, it is no doubt that she will get recognition. So we're very proud and honored to have her here, as she has won the Nari Shakti Puraskar. She has been on Bond Award and has been honored by Amitabh Bachchan and Sonakshi Sinha. She was on the India Today cover. She has been honored by so many ministers, by so many powerful leaders. She has even expanded her impact to the United States, and she recently went to a conference at Harvard University in Boston. And this is a woman that dropped out of school in 8th grade, and for her to be able to speak at Harvard University as a panelist is incredible. So as for the purpose of the organization, what do they do on a daily basis? I'm sure you guys are all wondering, how can we help? How can we continue to make an impact? And what is happening behind the scenes that we don't know about? So there are different sectors into what the organization is doing. Primarily, women's empowerment, giving women a voice, allowing them to be independent so that they don't have to rely on anybody else. And that includes distributing stitching machines. She started her own career and raised her own money by distributing stitching machines and creating apparel that way. And so now she's doing that for other people in her community. Distributing smartphones. We all know the importance of technology, so it is awesome to see that this technology is expanding to another place where people don't really have the opportunity to have it. Having work
workshops to raise awareness for rights. We all have human rights, and it's important that we realize what we deserve. Solar lights and exposure visits also. As for livelihood and improving the quality of life for women, they have entrepreneurship development, marketing training, design development trainings. They're teaching everybody on how to be independent so that they never have to say that they owe anyone else anything. They can rely on themselves. And for the arts and crafts promotion, they're creating wonderful clothes, like the outfit that I get an opportunity to wear today. They have exhibitions, fashion shows, craft workshops, live demonstrations, folk music, and are also featured on a lot of platforms like QVC and Indian Idol. Beyond that, for day-to-day basis on how the Rajasthanis are impacted, health initiatives, eye screening camps. A lot of us have bad vision and we need glasses, but in rural areas, people don't really get access to have glasses to be able to see properly. So being able to test people and improve their vision is a very important thing. Health camps and medical mobile units. A lot of people face health issues on a daily basis, and there's really no such thing as a stable insurance for everybody. So to provide low cost or even no cost health care for somebody makes a huge impact. Education, student internships, sponsoring students, the digital literacy program, where children who never even thought that they could one day graduate from high school and might do college, they're now going on to develop incredible careers. Throughout this COVID pandemic, a lot of people face hardships, and they did a ton of work in promoting the well-being of these people and making sure that they were able to combat any sicknesses. That included sanitization kits, oxygen cylinders, oxygen concentrators, and vaccinations. And as for the infrastructure, for the little kids and for the growing families in these communities, they're now developing smart villages and sports complexes that will change the lives and make life a little bit more enjoyable for these people that have to go through so much on a daily basis. Through all these combined, Roma Devi Foundation, as well as Vikramji and so many other people that are working together, have been able to impact 30,000 rural women. Now, this is a big number, but there are so many women in India, and we need to continue to make an impact on them and continue to expand this cause so that there are no longer any women in India that have to ever be dependent on anyone else, that can suffice for themselves, that can make their own income and develop their own skills. As for the livelihood, they have impacted 11,000 rural women through all these training programs like entrepreneurship training, digital literacy training, teaching people how to read and write and going through education systems, design development training. Through the arts and crafts promotions, they have impacted countless people. They have impacted so many people who have the honor of wearing their clothing, wearing their designs, being able to see their clothing in magazines, on magazine covers, in newspapers and articles. She has held many fashion shows and has been able to feature her crafts and the crafts of many artisans across Rajasthan at a lot of various shows such as QVC and Indian Idol. And as for health, they have impacted numerous people. For eye screening camps, they had 30,500 people that had OPDs reported. And they also had health camps where they had 20,000 people with OPDs reported. As for the education, they offer a scholarship, the Akshara Scholarship, and that is 25,000 rupees, and that promises arts, education, sports, and education for a student. So you can sponsor a single student with 25,000 rupees and promise them a future for their education. And for COVID relief, they've distributed 2 lakhs masks, 120 oxygen concentrators, 5,000 ration kits, and 5,500 injections, impacting 2 million rural people as
by district authorities for active and major support during COVID-19, which deserves a big round of applause. And for the infrastructure, as you can see here, they have developed sports complexes with a proposed impact of 30,000 students, as well as a rural center that will impact the livelihood of 5,000 individuals. Now, there are a lot of challenges in this area. This is a rural area, there isn't a lot of development. So, what do people face in this area on a daily basis? Primarily geographical issues. There are a lot of inaccessible areas that the government cannot reach and other people cannot reach, and there needs to be a way to help out the people that live in those remote areas. Along with that, a lack of transportation and a large geographical region. And for this, they have the mobile vans where they're trying to cover a large area to help out people that are in far places. Social issues, illiteracy, a lot of people are unable to read and write, and we know in today's generation that is the #1 most important thing for us to be able to do. Malpractices when it comes to healthcare, when it comes to a lot of things, people are treated unfairly sometimes, and being able to overcome those difficulties. And inequality, especially between men and women, where women are finally standing up for themselves in these communities. Organizational, a lack of funding sources, inadequate human resource, and infrastructure. There isn't a proper management system, and that is what the Roma Devi Foundation is working on doing, creating a stable system to support these women. And besides that, people are unaware. That is one of the biggest issues. They don't understand that what is out there on the other side of the world and what is possible for them in the future. They're closed off to what they know, and it is important to give them the opportunity to explore the rest. So some of the most important current requirements are primarily for women's empowerment, including training programs and exposure visits, and then for health camps, going to door-to-door camps, and OPDs where people are able to be helped on a daily basis for things that they really need urgently. And infrastructure, craft center at district headquarters, as well as a rural craft center that is a one-stop solution. So what is our initiative? What is our initiative today, and why are we here? Deepak Gavria from NRI Federation, as well as Shobna Patel, if you guys want to join us on the stage. Round of applause for them. They are supporting the Roma Devi Foundation for her contribution towards women's empowerment to uplift these rural communities by developing smart villages, schools, education systems, mobile hospitals, and healthcare facilities in order to enhance the livelihood of these 30,000 women and countless more. They will collaborate with the Roma Devi Foundation to create exclusive marketing and product distribution channels to retailers and stores across the USA and also worldwide. Thank you, Pallavi. And as you know, 2 दिन पहले ही, because it's such a short notice, and I understand weekdays, such a short notice, and 2 दिन पहले रोमा जी का एक गैप निकला आज के दिन का कि रोमा जी आज के दिन अवेलेबल है, तो शोभना बहन से हमने बात की और शोभना बहन ने राइट अवे बोला, बोले वी आर डूइंग इट, वी वांट टू डू वुमेन एम्पावरमेंट। हमने आज का प्रोग्राम डिसाइड किया। कई चीज़ें जेंट्स का पोजीशंस हैं, कई चीज़ें वीकनेस है, पर इसके बाद में भी शोभना बहन का कमिटमेंट, हमने पल्लवी और शोभना बहन ने कल पूरा दिन तैयारी की, ये पावर प्रेजेंटेशन बनाया आप सबके लिए ताकि ये मैसेज पूरी कम्युनिटी को जा सके। ये मैसेज सिर्फ हमने जितने लोग यहाँ पे उसके लिए नहीं, ये मैसेज है पूरी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के लिए है, जो हमें स्प्रेड आउट करना है कि रोमा देवी फाउंडेशन जो इतनी वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, हमें उनके साथ जुड़ना है और हमें उनके साथ जुड़ के उनके काम को आगे बढ़ाना है। यही हमारा एक न्यू जर्सी की तरफ से एक उनको तोहफा रहेगा, एक थैंक यू नोट रहेगा। और शोभा बहन इस चीज़ में हमारे साथ पूरी खड़ी है, मैं शोभा बहन को देता हूँ। Good evening everyone. Thank you very much for coming in a short notice and supporting वुमन एम्पावरमेंट, शक्ति द पावर, नारी शक्ति को आपने जो आज सपोर्ट किया है रोमा देवी के लिए, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट।
और मैं सबको ये अर्ज करती हूँ, एनी कंट्रीब्यूशन यू डूइंग टुडे इज गोइंग टू रोमा देवी फाउंडेशन, सो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड जॉइन द हैंड विद अस। रोमा देवी जी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो बहुत सारी लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। आपने ये सब देख लिया है, मुझे रोमा देवी को ग्लोबली इंट्रोड्यूस करना है, नॉट ओनली न्यू जर्सी, नॉट ओनली इंडिया, बट ग्लोबली वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस रोमा देवी की, जो उनके पास जो उनकी औरत है, उनकी जो शक्ति है, वो सब दिखाना है। नाउ रादर देन टॉकिंग मोर, एवरीबडी वांट टू लिसन रोमा देवी जी, सो प्लीज कम ऑन स्टेज रोमा देवी जी। वेलकम रोमा जी, प्लीज रोमा देवी को रोमा जी की स्पीच सुनेंगे, उसके बाद में फैशन शो है और कुछ अवार्ड्स हैं, और एक हम रोमा देवी जी के लिए शोभना बहन हम जो करना चाहते हैं, और बाकी लोग जो करना चाहते हैं हम उनको मौका देंगे। प्लीज़ आप आइए, और आप जो रोमा देवी फाउंडेशन के कर सकते हैं आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप हमने NRI फेडरेशन की तरफ से कोलैबोरेशन किया है, 501c3 है, टोटल टैक्स फ्री है, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहें मोस्ट वेलकम। और इसीलिए शोभना बहन ने हमने डिसाइड किया कि ये प्रोग्राम में हम कोई भी चार्ज और कोई भी टिकट नहीं रखेंगे, बिकॉज ये सब चीज़ सिर्फ रोमा देवी फाउंडेशन को जाना चाहिए। और इसके बाद जो रोमा देवी ने बहुत सुंदर कपड़े बनाए हैं, जो हमारे मॉडल्स ने पहने हैं, दे विल गिव द फैशन शो विद द रोमा देवी, सो प्लीज गिव द बिग हैंड टू रोमा देवी एंड हम न्यू जर्सी और रोयल अल्बर्ट के उनका स्वागत करते हैं। राम राम सर। राम राम सर। हमारी 30,000 बहनों की तरफ से एक बार फिर आप सभी को राम राम, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलना हुआ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी शोभना मैम जी, अल्बर्ट जी, दीपक जी, पल्लवी, सबने मेहनत करके आज का प्रोग्राम डिजाइन किया, आप सब लोगों तक मैसेज पहुंचाया, और आप सब अपना टाइम निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुए, हमसे मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्टोरी देख लिया, हमारा प्रेजेंटेशन देख लिया, लेकिन मैं आपसे यह कहूँगी कि जो संघर्ष करके मैं यहाँ तक आपके साथ पहुँची हूँ, आपके सामने हूँ आज, ऐसे ही कई महिलाएं हैं वहाँ की बाड़मेर की नहीं, पूरे राजस्थान की जो रूरल एरिया की बहनें हैं, उनके पास में बिल्कुल रोजगार नहीं है, उनके खुद के लिए उनके हाथ में 2 रुपए भी नहीं है। तो उन महिलाओं को लिए हम काम कर रहे हैं कि वो खुद सक्षम बने, अपना काम करके वो आगे बढ़े और अपने बच्चों को वो पढ़ा सके। तो यही हमारा सपना है कि हर नारी सक्षम हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी के आगे हाथ न फैलाए, ऐसी उसमें शक्ति हो। तो इसी विजन के साथ में हम यहाँ पे आए हैं, और आप सभी ने अपनी जन्मभूमि छोड़ के आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वापस अपनी जन्मभूमि के लिए हमें कुछ करना चाहिए, वही अपने हैं। तो उनके लिए हम सब मिलके आगे काम करेंगे तो हमारी भारतीय नारी है वो सक्षम जरूर बनेगी। एक दिन हमारा सपना है वो जरूर साकार होगा, वो होगा तब जब आप सभी का साथ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग सारी बातें सुन ली है, फिर भी मैं आपको बताऊं कि बताने में बहुत आसान है, लेकिन जो 14 साल मैंने निकाले हैं, जो संघर्ष मैंने किया है, वो मुझे पता है। वो समय के साथ धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचे, एकदम से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी तो आप समझ सकते हैं कि हम टोटल 7 बहनें हैं, तो 6 बहनों के बीच में मेरा बचपन कैसे गुजरा होगा। लेकिन मेरी दादी थी, मेरी ताई थी, उनका प्यार मुझे मिला और उनके साथ मैं बड़ी हुई। और हर घर में कसीदाकारी का काम होता है, क्योंकि पहले अपने हाथ से बना के कपड़े पहनते थे। जैसे मेरी दादी भी अपने हाथ से बना के मेरी बुआ के लिए या मेरे लिए बना रही थी, क्योंकि माँ अपनी बेटी को अपने हाथ से बना के देती थी। फोन नहीं होता था कि निकाल के बात कर लिया। वो जब भी माँ की याद आती, अपनी सिंदूक खोल के वो अपने सिंदूक से प्रोडक्ट माँ के हाथ से बना हुआ देख के ही वो तसल्ली करती थी। तो ऐसे प्रोडक्ट हर घर में बनते थे, लेकिन
प्रेजेंट करना, ये हमने उनको ट्रेनिंग दिया, स्किल की ट्रेनिंग दिया, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दिया, फिर मार्केट से लिंक करवाया, तब जाके ये प्रोडक्ट है वो मार्केट में आए। तो धीरे धीरे करके पहले हमने होम फर्निशिंग के आइटम बनाए, फिर गारमेंट्स बनाना शुरू किया, अब वेस्टर्न वगैरह वो बना रहे हैं, फैशन शोज किए। फैशन शो करना ये गांव की महिला के लिए कितना मुश्किल होगा। कई जगह पहले तो फैशन शो के नाम से डर लगता था, लेकिन फिर पता चला कि हम हेरिटेज फैशन शो भी कर सकते हैं। तो लगा कि हमें फैशन शो करना है, लेकिन कहाँ करना है, कहाँ मौका मिलेगा, ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। हम लग गए थे खोज में। उसी टाइम राजस्थान में, जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, और वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो वो भी देख के बोले कि आप आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, यहाँ पे तो बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे हैं, जैसे बीबी रसेल, मंदिर वेदी, अब्राहम ठाकुर, अलमेंडा, तो ऐसे डिजाइनरों के साथ में आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। मैंने कहा नहीं, हमें आप एक बार मौका दीजिए, हमें फैशन शो करना है। तो जैसे तैसे करके वहाँ से फैशन शो का मौका मिल गया, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि हम डिजाइनरों के साथ में हमारा कलेक्शन कैसे जाएगा, क्या कलर थीम लेंगे, क्या कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारी टेंशन थी। तो हमने और बड़े एनजीओ से जाके मदद मांगा कि आप हमारी इसमें हेल्प करिए। तो उन्होंने बोला कि ये आपका लेवल नहीं है, आप आर्टिजन हो, फील्ड में काम कर रहे हो, वही आपके लिए बेटर है। तो मैंने कहा मदद करने वाला कोई नहीं है, बहुत दुख हुआ, रोना आया, लेकिन मैंने ये ठान लिया कि फैशन शो हम जरूर करेंगे। तो जैसा हमें समझ में आया, खुद कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, कलर थीम लिया, और हमारे कॉस्ट्यूम तैयार हुए। जब फैशन शो के रैंप पे आए, हमें बहुत डर लग रहा था कि कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारी ऑडियंस और डिजाइनर खड़े होकर तालियां बजाई, और 5 डिजाइनर बाड़मेर पहुंचे, अपना नेक्स्ट शो के लिए कलेक्शन बाड़मेर से बनाया, और डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता था। उसके बाद में ट्राइब इंडिया की गुडविल अम्बेसडर बनी, और ट्राइबल आर्टिजन है, उनके कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेट में फैशन शो करवाते हैं, और लगभग ट्राइब के 130 स्टोर हैं इंडिया में, उनमें उसके प्रोडक्ट है वो सेल होते हैं। ऐसे ही हमने सोचा कि हम अभी इंडिया में एग्जीबिशन कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना इंटरनेशनल करें, जिससे हमारे पास में ज़्यादा काम आएगा और ज़्यादा बहनों को हम जोड़ पाएंगे। ये सोचा ही था। उसी टाइम मुझे जर्मनी में हेड टेक्सटाइल करके एक फेयर होता है फ्रैंकफर्ट मैसे में, वहाँ से मेल आया कि इंडिया से मात्र एक एनजीओ को हमने सेलेक्ट किया है, और उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था कि हम बाहर एग्जीबिशन करना सोचा ही था, लेकिन सीधा जर्मनी जाएंगे ये बिल्कुल नहीं सोचा था। इधर उधर लोगों से बात किया कि वहाँ का कैसा मौसम है, खान पान क्या है, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं, तो वो दिक्कत हो गई। तो किसी ने बताया कि आप वहाँ जा रहे हैं, दिसंबर का महीना है, ठंड बहुत ज़्यादा है, उस तरीके से कपड़े लेके जाना, और खाने पीने का सामान पास में रखना। तो हमने आटा, सब्जी, मसाला सब साथ में लेके गए। जर्मनी में जाके रोटियां भी बनाई और वहाँ के लोगों को भी खिलाई। उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट बार ताजी ब्रेड खाई। मैंने कहा आपने कभी रोटी नहीं खाई? तो वो हमारे यहाँ बनती नहीं है, हम सिर्फ ब्रेड खाते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं साथ में लेके आई। और वहाँ का मैं एक आपको किस्सा बताती हूँ। जब मैं बूथ में बैठी थी, मेरा काम कर रही थी, तो एक 10 महिलाओं का ग्रुप आया और मेरे पास में आके खड़े हो गई। मैंने उसके सामने देखा तो किसी की आंखों में आंसू आए हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो बोल रहे कि आपको देख के, आपकी ड्रेस को देख के हमें हमारा मोल याद आ गया है। किसी की नानी इंडिया से थी, किसी की दादी इंडिया से थी, वो पाकिस्तान की फैमिली थी, लेकिन जर्मनी में वो सेटल थे। तो इस तरीके के जब एक्सपीरियंस हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे मेरे पहनावे पे बहुत गर्व हुआ कि मुझे ये नहीं बताना पड़ रहा है कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद में फिर हमने सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, यूएसए काफ़ी जगह पे हमने एग्जीबिशन किया। लंदन फैशन शो में भी हमारे प्रोडक्ट गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते हमने मार्केट तैयार किया, और उधर हमने गांव-गांव, घर-घर जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट किया, क्योंकि एक घर से दूसरे घर जाना इतना आसान नहीं है। पूरा डेजर्ट एरिया है, और वहाँ पे दूर दूर ढाणियाँ बनी होती है, रेल के डिब्बों के बीच में एक जगह इकट्ठे गाँव में घर नहीं है। एक बस में बैठ के उनके घर गाँव के आसपास जाके वहाँ उतरना, उसके बाद में लगभग 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर रहता है, पैदल उनके घर तक पहुँचना, पीने के लिए पानी भी नहीं था। वहाँ जाने के बाद भी ये सवाल पूछते कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, पता नहीं आप
इनको क्या सिखा के जाओगे, कल इनको कहीं जाने को बोलोगे, तो बहुत सारे उनके क्वेश्चन होते थे। हिम्मत हार जाते कि क्यों कर रहे हैं, हम हमारे लिए कर रहे हैं, वही बेटर है। लेकिन जब महिला का दर्द सुनते तो लगता कि हमारा दर्द तो कुछ नहीं है उनके आगे। फिर उनको समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना होगा, ये घर बैठ के घर का सारा काम करके जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा ये काम करके देगी और हम इनको घर बैठे काम देके जाएंगे और लेके जाएंगे। तो ऐसे करके कुछ बहनों को साथ में जोड़ा और उनके पास जब इनकम आने लगी तो पड़ोस की और भी बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। ऐसे करते करते जो 10 महिलाओं का सफर शुरू हुआ था, आज 30,000 से ज़्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उसके बाद में मुझे लगा कि मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया, मैं आगे नहीं पढ़ पाई। तो आज भी कई बच्चियां हैं गांव की जो 10वीं या 12वीं के आगे नहीं पढ़ पाती है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती है या स्कूल दूर होने के कारण। तो उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है, जो सालाना 25,000 रुपये एक बच्चे को देते हैं। और ऐसे ही जब मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ, क्योंकि मैं उसको मेडिसिन नहीं दिला पाई, लेकिन आज भी गाँव के वही हालात है। आफ्टर कोविड के बाद हो चाहे आई का प्रॉब्लम हो, क्योंकि सारे सब हाथ से काम करते हैं सुई और धागे से, तो आंखें कमजोर होती है, लेकिन इजीली वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते। तो उनके लिए हमने हेल्थ चेकअप के लिए वैन, डॉक्टर्स सब फील्ड में जाते हैं, उनके घरों के बीच में जाते हैं और वहाँ पे उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि आप आइए चेकअप करवाइए। वैसे वो आगे से नहीं आते हैं, लेकिन हम 2 साल से रेगुलर हमारी हेल्थ वैन है, वो फील्ड में है। अभी एस्टर ग्रुप है एक दुबई से, उनके साथ में 5 साल का MOU हुआ है और उनके साथ में उन्होंने एक वैन पूरी डॉक्टर्स की टीम बाड़मेर में लगाई है और वो गांव-गांव जाके हेल्थ चेकअप का काम कर रही है। ऐसे ही जब मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर थी और दिल्ली में थी, मैरी कॉम उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैरी कॉम कौन है। एक दिन हम डिनर में बैठे थे, ऐसे परिचय हुआ तो मुझे पता चला कि 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी ये कितना गोल्ड मेडल लेके आई है भारत के लिए। तो मुझे लगा कि 8वीं में एक बार टूर्नामेंट जाने का मुझे भी मौका मिला था, लेकिन आगे ना पढ़ाई कर पाई ना कहीं जा पाई। लेकिन आज हमारे यहाँ की बच्चियाँ कितनी टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास में मौका नहीं है, उनके पास में जगह नहीं है। तो उनके लिए क्या किया जाए? तो किसी ने बोला कि आप स्टेडियम बना लीजिए। अब हमारे स्टेडियम कौन सा देखा हुआ था, एक सीढ़ियाँ बनी है, एक बहुत प्यारा बना हुआ स्टेडियम होगा, उसका तो 4-5 लाख रुपये खर्चा होगा, हम बना लेंगे। फिर ये हुआ कि बच्चे स्कूल जाती है, स्कूल से सीधा घर जाती है, घर जाके वापस खेलने के लिए आए, ये पॉसिबल नहीं है, ना उस आउटफिट में घर वाले अलाउ करते हैं। तो हम कैसे करें जिससे वो हर मौसम में खेल सके, हर टाइम में? तो उसमें 2 साल लगे हमारा वो प्रोजेक्ट तैयार करने में और लगभग 10 करोड़ की लागत का एक स्टेडियम का प्रोजेक्ट तैयार हुआ। और उसके डोनर है सिंगल पर्सन जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, हरी जी गढ़वा। अभी मिले नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा एक सपना है वो पूरा कर दिया। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी आपको, लेकिन आप सभी का प्यार मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं पिछले लगभग 20 दिन से USA में हूँ, तो लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इंडिया से बाहर हूँ। आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप जब भी इंडिया आए तो बाड़मेर का विजिट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगी कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। एक बार रोमा जी के लिए बहुत बहुत तालियां। ये रोमा जी की किताब है जिसका शीर्षक है खड़े रहे अड़े रहे, और इन्होंने कल प्रेजेंट किया। हमारे पास कॉपी आएंगी तो हम आप सबको भी भेजेंगे। हमने आप सबके टेबल पे फॉर्म रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि रोमा जी के डोनेशंस कहाँ कैसे कैसे आप जुड़ सकते हो, कैसे कर सकते हो। जिसकी भी इच्छा हो, जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं। हमारे पास एक रिसिप्ट भी है, फॉर्म भी है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, कैसे भी जैसा भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं।
हम लोग 15 मिनट 20 मिनट प्रोग्राम के बाद रहेंगे, तो आप आके अपना अपना इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं जो भी काम करना। अभी शोभना बहन रोमा जी को और कुछ बच्चों को कुछ प्रेजेंट करेंगे। हम NRI फेडरेशन की तरफ से हमने हमारा 30 साल से अमेरिका में होलसेल ज्वेलरी का बिजनेस है, तो हमें मालूम है कि इंडिया आज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्वेलरी हो गया है। जो पहले इजराइल और हांगकांग दूसरी जगह था, पर आज इंडिया लीड करता है। और बीकानेर एक बहुत बड़ा हब है जो राजस्थान में इंडियन स्टाइल ज्वेलरी जो अपने आप इंडियन मार्केट में देखते हैं वहाँ से आती है। तो हमने रोमा जी के साथ बात की और विक्रम जी से बात की, हमने सोचा क्यों ना हम एक ज्वेलरी इंडस्ट्री एक सेटअप करा जाए वहाँ पे बाड़मेर में या जहाँ भी उनको उचित लगता है राजस्थान में, ट्राइबल वुमेन्स के साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए। तो वो प्रोडक्ट अमेरिका में और बाहर में आके हम एक्सपोर्ट कर सके, बेच सके, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मार्केट है। तो उसके लिए हमने एक प्लान किया है कि हम एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करेंगे रोमा जी के और विक्रम जी के सपोर्ट, इनकी संस्था के थ्रू, और उसका प्रोडक्ट हम यहाँ पे लेके आएंगे। उसके लिए हम 2 साल में $1 मिलियन तक स्पेंड करने को तैयार हैं, और हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम वो एक MOU साइन कराएंगे जिसमें हम विक्रम जी को भी इन्वाइट करेंगे, और जिसमें यह है कि हम लोग कमिट हैं कि हम ये काम करेंगे और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिससे उनकी हाई स्किल और उनको ज्वेलरी के थ्रू हाई इनकम मिल सके। Now I would like to present award रोमा देवी को हम रोयल आल्बर्ट के NRI फेडरेशन की ओर से थोड़े पीछे आ जाओ, थोड़े पीछे। NRI फेडरेशन के बिहाफ से हम ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं। रिकॉग्निशन for outstanding contributions towards women empowerment and uplifting the lives of women, NRI Federation, along with the Roma Devi Foundation, have taken the initiative to expand the Roma Devi products Thank you. in retail and chain stores across USA, along with establishing jewelry manufacturing facilities in Rajasthan, employing rural and tribal women, with an investment of $1 million over the span of 24 months. हम बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें 50-60 वॉलंटियर्स चाहिए जिनको इनके प्रोडक्ट्स को आगे हम रिटेल स्टोर्स में अपने दोस्तों के इंटरेस्ट में एक एंट्री दिला सके और आगे हम चेन स्टोर्स में मूव कर सके। तो जो भी वॉलंटियर्स और आप रिकमेंड कर सकते हैं और कमेटी, तो प्लीज़ हमारे को कांटेक्ट करें। अब और शोभना बहन ने इस पूरे चीज़ में हमारा इमीडिएटली बोला हर चीज़ में हम आपके साथ हैं और रोमा जी के साथ खड़े हैं, और सेम टू अल्बर्ट जसानी जी। Let me give you one. Thank you very much. Thank you very much for coming, and everybody appreciate. Thank you very much. You should support the lady who worked hard, you know. And आपको भी जानना चाहिए छोटे-छोटे गांव में, and you have to do the same thing starting what she started. So promote our local product from India to sell over here. Thank you very much. Now I would like to present this award on behalf of all our panelists, Albert Jasani, Dr. Dinesh, and myself. Thank you. To Roma Devi team. Yeah. One, Ajay, Albert bhai. Shobna bhai, look at here. Albert bhai, thank you. I would like to call VVN alumni
जो विद्यानगर की यूनिवर्सिटी है उसका कल सैटरडे को एक फंक्शन है. इट्स अ बिग एसोसिएशन एंड दे वुड लाइक टू हेल्प यू टू. सो प्लीज कम एंड वुड लाइक टू प्रेजेंट द अवार्ड. The VBN alumni where I studied, Sardar Patel University. It's a very nice university and I'm really proud of that, you know. Yes. Please come. May I jump? Okay. Everybody look at here. 1, 2, one more. Thank you. This is called Sakti Power. Also, I would like to call Kalasi School of Art, Bina Menon-ji. Please come on the stage. We would like to honor her as a dance guru of New Jersey. માઈક હોય ને કચાકચ ફોટા પાડું. Hello. For dinner manners, what can I say? You heard everything about her. She's doing the greatest dance schools and her, one of the students, she performed in New York City on such a Carnival Hall, and that was the great prestige. It was article in news, daily news, New York Times, Star Laser. So it was a great thing. You're doing a good job. Thank you very much. Bina Menon is number 1 school, जो सबसे बड़ी स्कूल है इधर जो डांस सिखाती है बीना जी. उसके पास बीना जी के how many students हुए? Almost more than 500 students, you know. So वो हमारे भारत के जो क्लासिकल डांस है उसकी गुरु है. I would like to present this award on behalf of Roma Devi and Roma Devi ji to Bina Menon for her great contribution to the community. Thank you. And I'd like to thank all media taking picture, and special thanks to go to Kasiwala, providing that he always work hard for community. He never got too much credit, but we thank you, we love you, Kasiwala, we appreciate. Thank you. Also, I would like to call Sonal Garvi. The Sonal Garvi who is helping for Miss India New Jersey and the part of our team, Shakti the Power, जो हमारी नारी शक्ति पावर है उसकी टीम की लीडर भी है. Now let me go to Mukesh Kasiwala. He will say a few words about the Albert Jasdani. What is it? Already say, I speak already. But before she goes over there, talk about me, I'd like to say something about the Sopna Patel. She's been doing work toward Miss India, been running this place and how everything. She deserved the award, and her clip was, I thought public, because all this side is a beautiful girl, so I just go after them. Thank you. And I really appreciate Sapna, and she would like to honor you. Love. And Mukesh bhai say something about her. Yeah, thank you. Albert Jasdani never say anything about me. First time I hear about me. See, Albert is so humble. He never come on a stage. When he comes on the stage, he hardly speak like a couple of words. What he says, welcome, eat, enjoy. But let me tell a little bit in Hindi. आज 2000 में ये हॉल बना, 2000 में उनके 3 दिन लोग, जैसे आपका राजस्थान स्टेट है,
वो इंडिया का जियोग्राफिकल लार्जेस्ट स्टेट है, आपको पता है। ये इतना छोटा है, लेकिन अमेरिका में जो इंडियन होते हैं ना, जो इंडिया से कोई भी आता है, आपने अल्बर्ट हॉल का नाम सुना है, लंदन का, वो आर्ट एंड साइंस के लिए फेमस है, पता है आपको। लेकिन यहाँ ये जो अल्बर्ट पैलेस है, उसको हमने नाम दिया है गेटवे ऑफ इंडिया। जो इंडिया से आते हैं, आप ठीक करो कि अगर ये अल्बर्ट हॉल नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। सो दिस द वैल्यू ऑफ अल्बर्ट हॉल के अंदर एवरी वीक देयर आर 5,000 to 8,000 पीपल आते हैं यहाँ पे। थिंक इफ यू कैलकुलेट, इट्स लाइक 6 million people have visited Albert Palace in 22 years. And not only that, आर्ट एंड साइंस के लिए जो अल्बर्ट हॉल लंदन का फेमस है, ये हॉल में यहाँ हम बैठे हैं आज, सिंगर मौजूद है, आनंद जी मौजूद है। आनंद जी ये इंडिया मेला करते हैं, ये एसपी एलिमनाई यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो एजुकेशन में है, दे स्प्रेड द वर्ड ऑफ एजुकेशन इन अमेरिका। यहाँ हमारे पास पीटर भाई है, ललित कोठारी, ही इज द गाय हु स्टार्टेड फर्स्ट गरबा इन अमेरिका। सो यहाँ जितने बड़े हमारे हिंदी भाषी के युवा संस्थान के हैं, जिन्होंने यहाँ अमेरिका में ऑफिशियल हिंदी भाषा को यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया, तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी यहाँ आता है, दे रिप्रेजेंट thousands of people. So think about it. So that is the quality of Albert. Albert का ये हॉल आपको शायद पता है कि नहीं। अगर गिनीज बुक को यहाँ लिया जाए, लोग बात करते हैं गिनीज बुक की, आज तक 22 साल हो गए अल्बर्ट को, आज तक ताला नहीं लगा अल्बर्ट में। ऐसा दुनिया में कोई हॉल नहीं है। There is no lock in Albert Palace. अगर गिनीज बुक वालों को बुलाया, that is a record also. So we are so fortunate to have the Albert. Whether it is a religious, cultural, political, any event is happening. Not only that, Indian community के लिए अल्बर्ट काम नहीं करते, एयरफोर्स वाले, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, FBI, पुलिस डिपार्टमेंट, ये पूरा जो अल्बर्ट पैलेस है, he made a trust. Who is in America that they have given the entire Albert Palace to the trust. So let's give a big hand to Albert. We are so fortunate कि हम यहाँ बैठे हैं. It's blessings of Albert, Shobna Patel, Dinesh B. Patel. Let's give a big hand. Thank you very much. A round of applause for Albert भाई, शोभना बहन, दिनेश भाई, और of course अपनी सेलिब्रिटी, आज की सेलिब्रिटी के लिए बहुत बड़े कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है, तो हमारे पास लॉयर्स क्लब के कमलेश भाई आए, वो बोलते हैं कि हम लोग क्लासेस जितने भी रोमा देवी फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होगी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा कमिटमेंट है। तो मैं कमलेश भाई को माइक दे देता हूँ। नमस्कार, रोमा जी थारवटे खूब खूब स्वागत है। और तारे बैठे 30,000 ऐसा लोगों ने सारा सगला लोगों का प्रणाम। थैंक यू। हम लायंस क्लब से ये वादा करते हैं कि आपकी पूरी संस्था में या आपके बगल के गांव में किसी को भी चश्मे की ज़रूरत हो, तो हम यहाँ से वो चश्मे बिना शुल्क पहुँचा सकते हैं। 30,000 बोलो, 10,000 बोलो, 2,000 बोलो, 500 बोलो, 100 बोलो, जितने आप बोलोगे, हमें सिर्फ उनके नाम और नंबर चाहिए। इस आंख में कितना, उस आंख में कितना, हम यहाँ से करके भेज देंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वंस अगेन थारा खूब खूब कमलेश भाई के लिए तालियां। हमारे पास वर्ल्ड पीस और हेल्थ फाउंडेशन से प्रमोद भाई हैं और उनकी कमेटी है। और प्रमोद भाई आइए, शिवजी अग्रवाल, सुधा अग्रवाल, पदम बंसल, राजेंद्र प्रसाद, विद्या प्रसाद, प्रमोद भगत जी, ये वर्ल्ड पीस फाउंडेशन से हैं, और ये रोमा देवी फाउंडेशन के लिए कुछ
कुछ अनाउंस करना चाहते हैं तो वेलकम देम। और हमारे पास राजेश आनंद जी हैं, हमारे पास हितेश भट्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनाउंस करना चाहते हैं, तो प्लीज आगे आए और मौका देते हैं। प्रमोद भाई, हमें फैशन शो करना है तो प्लीज जो भी करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। रोमा जी, आपका इंक्रेडिबल जो लाइफ का जो लोगों ने यहाँ, सबसे पहले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार रोमा जी के लिए फिर से सब लोग तालियां बजाएं। इनका बचपन, इनकी लाइफ के बारे में हम लोगों ने पूरा वीडियो में प्रेजेंटेशन देखा, और हमारे अल्बर्ट भाई, हमारे हमारे अल्बर्ट भाई शोभना बहन, शोभना बहन और हमारे जो एनआरआई फाउंडेशन के जो दीपक जी हैं, इन लोगों ने जो काम कर रहे हैं साथ में मिलकर के, बहुत बड़ा ये मानवता के लिए सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी वर्क है। हमारे फाउंडेशन के सभी ट्रस्टी से जो हमने चर्चा की, तो वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं इस मिशन में। और हमारे मिशन के यहाँ डॉक्टर शिव अग्रवाल जी, सुधा अग्रवाल जी, डॉक्टर पदम बंसल जी, राजेंद्र प्रसाद जी और उनकी मिसेस, वो लोग मंच पे आगे हैं क्या? हाँ प्लीज। तो हम लोग मिलकर के आपके कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग आपसे बात करेंगे, और आप जो भी हमें कहेंगे हम लोग उसके लिए यहाँ से, और इमीडिएट हम लोग अपने फाउंडेशन की तरफ से डिसाइड किया है कि हम लोग $1000 तो भी हम राइट अवे हम चेक दे रहे हैं। और ये बहुत छोटा सा एक शक होता है ना, किसी बड़े काम के लिए छोटा सा शक उनके साथ काम शुरू किया जाता है, तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं। परमात्मा आपकी इस नारी शक्ति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही आप काम करते रहें। पूरा एनआरआई समुदाय शोभना बहन के नेतृत्व में, हमारे दीपक भाई के नेतृत्व में, और हमारे ओनली वन इन वन अल्बर्ट भाई अमेरिका से, उनके नेतृत्व में आपके लिए जितना हो सकेगा हम करेंगे। क्योंकि ये जो ट्रस्ट है अल्बर्ट भाई ट्रस्ट, जो हमारा है अल्बर्ट इसानी रॉयल अल्बर्ट पैलेस ट्रस्ट, वो हमेशा ऐसे काम के लिए, अल्बर्ट भाई के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। हमारे बड़े परम मित्र हैं, हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं, हम लोग आत्मा से रिश्ता बनाते हैं। धन्यवाद। वक्त की कमी से I would like to call Sanket Upadhyaya and Dr. Nilesh Patel on the stage, you know. He will say a few words about the nursing home. ये संकेत जी है, वो नर्सिंग होम चलाते हैं इधर, सभी ओल्ड एज पीपल की चेयर नो एज माय डॉक्टर नीलेश पटेल। Let me introduce Dr. Upadhyaya. He undertakes so many nursing homes, and he was chief executive for Caremarn and many facilities. Now he is in a private business to help old people and to consult various problems, and I will give you a few minutes. Good evening, namaste. I'm honored that I had an opportunity to stand by such a star of the evening, Roma Devi. Roma Devi, मैं राजस्थान से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मैं जितनी बार इंडिया आता हूँ, हमारे यहाँ पर राजस्थान में नागपुर में हर साल आता हूँ। दिनेश भाई से और से बोल रहे थे इस बार आएंगे हम लोग, आपके यहाँ ज़रूर विजिट करेंगे, पर हमसे जो हो सकता है आप प्लीज़ हम लोग से किसी से भी बात करिए। वी विल ऑलवेज सपोर्ट योर फाउंडेशन। रोमा जी, अभी हम हमारा फैशन शो कर रहे हैं, प्लीज हैव सीटेड। हम फैशन शो शुरू कर रहे हैं राइट अवे। रोमा जी के लिए वंस अगेन तालियां। जब तक हम एक राजस्थानी म्यूजिक चालू कर सकते हैं, 2 मिनट में फैशन शो शुरू करें। ओके, हियर इज द फैशन शो। रोमा देवी कलेक्शन, और पीछे रोमा देवी, आपको कुछ कहना है ये कलेक्शन के बारे में?
चेयर इसको थोड़ा उधर ले आओ नहीं
Roma ji to speak few words. हम बहुत कम प्रोडक्ट लेके आए थे, उनमें से 20 सेल हो गए और कुछ ही पीस हमारे पास में बचे तो आपके सामने प्रेजेंट किया। लेकिन आप romadevi.com पे देख सकते हैं और जो भी यहाँ पे ऑर्डर करना चाहेंगे तो हम वहाँ से भेज सकते हैं, या अपन यहाँ पे जब भी एग्जीबिशन करेंगे उस टाइम या प्रेजेंट करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। लेकिन romadevi.com पे आप जाके देख सकते हैं, हर रोज नई डिजाइन बनती है, नए प्रोडक्ट बनते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैंने कहना है ये रोमा देवी प्रोडक्शन का है और खुद रोमा जी ने मुझे तैयार किया है। थैंक यू। रोमा देवी की ये सब ज्वेलरी की है, किसी को कुछ भी ऑर्डर देना है, कुछ कस्टम बनाना है, वो सब कुछ करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रोमा देवी जी, आपकी कलेक्शन और आपका टाइम के लिए। ये जो भी कपड़े आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हमने डिज़ाइन करे हैं। ऑल दीज आर्टिस्ट्स जो इंडिया में रहते हैं और ये बनाने से वो एम्प्लॉयड हो रहे हैं। सो वी आर सपोर्टिंग देम बाय वेयरिंग दीज क्लोथ्स एंड आई एनकरेज यू ऑल to keep pushing them and to keep providing them with work and order some of these amazing designs. So congratulations to Roma ji and a huge round of applause for her. 50. And especially for corporate gifts, for Diwali gifts, any specialized orders, you can always send her a request, look on the website, send an email, and place an order for anything you may need. ये प्रोडक्ट है, ये उन बहनों के हाथों से बना हुआ है जो वो कभी बाड़मेर शहर तक नहीं आई है। तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है उनके साथ में। ये सिर्फ आप एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, ये आप किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। इसी भावना के साथ में आप इस प्रोडक्ट को खरीदें और पहनें। I would like to Roma Devi to present the certificate to all the models. Please. Sunday, Miss India New Jersey 2022 top Look at here. Thank you. Next. Like to give Raksha Tripathi, Mrs. India New Jersey 2022. Thank you. To give Dalita is a choreographer and dancer. Thank you. We like to invite Tanvika, Miss India Royal Albert Palace team who won this title. And she is also a very good dancer. Vaidehi, Mrs. India New Jersey, the best talent. She got that award for the best talent. Vaidehi. Okay, now I am giving to Sonal. And Tanvika, you have the special award for Miss India New Jersey team 2022 from Royal Albert Palace, from Roma Devi. To all Miss India New Jersey 2022 girls. Thank you. Ready? 1, 2, 3. Thank you. Okay, now, last but not the least, the guys. So here we have Ashwin. Wait. We have Anuj. Thank you. Now we have Ian. Anuj Sharma. Yay! Thank you for supporting Anuj. I just told him yesterday and he was ready to model for this great cause. Thank you so much. And Bharat Gadgil. My better half, always supporting for all the good causes. Thank you, Bharat. Okay, first Anuj again. No, the other one, the first boy.
Ashwin. Anil ji, please can you come on the Come here. stage? Ashwin. Venmo, Anil ji. Thank you. Anil Bhai, can you come on the stage, please? Thank you guys. Thank you so much. भाई मारेंगे भाई Thanks, Shraddha ji. सर जी यहाँ देखिए. I would like to call our core member Shraddha ji on the stage. Thank you, Shraddha ji. Thank you. Thank you. Thank you, Roma ji. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Now you guys can enjoy dinner. Thank you so much for supporting. Thank you very much to all photographer, videographer, TV Asia, VTV Gold. Thanks to Mr. Simona. Thank you to DJ. Thank you for coming everyone. Thanks Ashok Kumar, all our parents. Thank you our guru and thanks all our parents and Albert Sasani. Without him, we cannot do any function. Thank you Sunil Hari. And Lakshmi ji want to say something.